ज्वाइन How are you, ma'am? Hi, ma'am. Namaskar, ma'am. How are you, ma'am? Good morning, ma'am. How are you, ma'am? Morning, ma'am. Namaskar, ma'am. How are you, ma'am? Ma'am. I'm fine. Yes, beta. Namaskar, ma'am. Namaskar, ma'am. नमस्कार बेटा. ये मैम सेकंड सी का इंग्लिश का क्लास कब है मैम? इसके बाद है बेटा, यानी कि 10 o'clock पे स्टार्ट होगा आपका सेकेंड सी का एट 10 o'clock. तो अब कौन सा है बेटा? आप अपना टाइम टेबल देखो, टाइम टेबल में होगा आपका कौन सा क्लास है. Okay, so okay, I am good beta, thank you, I am good. Okay kids, so first of all I will appoint today's monitor. Hello beta, hello. Okay, so today's monitor is Durva Patel. Yes, ma'am. Beta, you are today's monitor of the class. Okay, so let's start with a prayer. Everyone please join your hands and close your eyes. Yes, Durva. Start the prayer, beta. Om Bhuvashwara Datsavidurvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, very good Durva, very good beta. Yes. Okay kids. So let us start today's English class. Okay Durva, now you can keep your mic off, okay? And Harshti beta, please keep your video off. Keep your video off beta. Okay kids. So what we did yesterday kids, हमने yesterday क्या किया था? Okay, who will tell me? Okay, are you yes, are you? What we did yesterday beta? Ayudit Roja. मैम मुझे पता है. हाँ बोलो. Yes बेटा से. आरव पटेल. Chapter number 7. Yes. So that is yesterday we started our new, that is travel. That is unit 5. Travel. Yes, very good beta. So yesterday हमने क्या किया? मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, है ना? That was a cartoon. Travel. Yes beta. Yes. And we did getting started activity जिसमें हमने pictures के names लिखे, like lighthouse, then Kathakali, okay, beach. So yes, martial arts. So these were some of the names of the pictures that we brought, right? Okay, so that is it. Then we did listening activity की थी हमने, जिसमें बहुत ही yummy फूड था. That was South Indian food, जिसपे आपने क्या किया? सर्कल किया. Okay, and then we did phonics. That is in phonics we have whenever O and U are together, so they make a sound, and that sound is which sound? Hasti? O and U beta, O and U. O and U जब साथ में होते हैं तो कौन सा साउंड देते हैं वो? हस्ती? क्या मैं फिर से बोलो ना? मैंने ये पूछा कि फोनिक्स में जो हमने कल O and U का साउंड किया था, कि जब O and U एक साथ होते हैं तब उनका साउंड क्या होता है?
Ow. Ow. Yes, very good. So yes, Ow. so that is the phonic word. Yes. So हमने ow sound किया. Okay. Now speak it. Okay. Yes. Slope, you can't see me. बेटा मेरा वीडियो ऑन ही है. बेटा everyone give thumbs up if you can see me. Those who can see me, please give thumbs up in the chat box. Okay, Ruhi. Okay. Slope, do one thing. Beta, leave and then again join. If you are not able to see me, then leave and then again join. Okay. Okay, everyone. Okay. Now, speak it. So, before starting anything new today, first of all, I want to say some sentences. Okay. And so, आपको वो sentences सिर्फ सुनने हैं. You will just listen to that sentences. So, okay. Okay. So, okay. Pulasya is a good boy. Pulasya studies in second standard. Then Dharam is very quiet. Dharam is very quiet child. Dharam loves to eat ice cream. Then Ruhi plays with a football. Ruhi is in the ground. Duck loves to eat chocolate. Duck loves to play cricket. Okay. So in this sentences आपको क्या लगा कि मैंने क्या कहा है आप लोगों के बारे में? About Pulasya, Dharam, Ruhi, Duck. Yes. What did I say? मैंने पुलस्त्य के बारे में Pronoun. Okay, so directly pronoun. Pulasya is the good. Okay, now see it. See, so whenever, so अगर हम कोई भी sentence बोलते हैं, like say I say Pulasya. So Pulasya is a good boy. Okay, then Pulasya studies very well. So in two sentences, what I did, I used, so in both of the sentences, I used Pulasya for 2 times. मैं दोनों ही sentences में Pulasya use किया. Same with Dharam, same with Ruhi, same with Duck. तो उनके नेम्स में जब मैंने उनके बारे में 2 सेंटेंसेस कहे, so what I did, मैंने 2 times उनके नेम्स लिए. I repeated their names. Okay. So but हम इस तरीके से नहीं बोल सकते. We cannot repeat the names. जब हम किसी one person के बारे में या किसी के बारे में भी अगर when we are speaking something, if we are writing something, then we do not repeat their names. So in place of repeating their names की जगह पर हम क्या use कर देंगे? We use some other words, and these words are called Pronoun. pronouns. Very good, everyone. Pronoun. That is for today's topic, everyone. Yes, beta. Pronoun. So we have, like in language leader, we have pronouns. So today's topic is language leader. We are going to do language leader. Then pre-reading of the chapter. And then we will also read the chapter. That is reading of the chapter. Okay, in subtopic in language leader, we have pronouns. Okay. So we have pronouns. So by language leader, then by pre-reading and reading, as we have reading. So skill that you are going to develop is reading. Because in our reading of the chapter, there are so many new things that you are going to learn, how to read. So that will increase your reading skills, everyone. Okay. Ma'am, your video is not.
What beta? My video is what? Ma'am, your video is not. Oh, भाग गई. Beta. Okay. So we are going to. So the skill that you will develop from this is the reading skill. Okay, kids. So now let us start our class. So everyone, we will be starting with language leader. So everyone, please open your textbook, English textbook, and in that open page number 57. Page number 57, everyone. Page number 57. That is language leader. There everyone, write pronouns के पास लिखो CW and today's date. CW and today's date. That is on page number 57 and write CW and today's date. Today's date, see, I have written over here. That is 7th August 2021. So yes kids, हमने ग्रामर में ऑलरेडी प्रोनाउंस का चैप्टर कर दिया है. So pronouns, what does a pronoun do? So pronoun it replaces the noun. यानी जो प्रोनाउन होता है वो नाउन की जगह ले लेता है, उसे रिप्लेस कर देता है. ओके, तो हम नेमिंग वर्ड की जगह जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन. So in pronouns we have he, she, it, we, they, you and I. Okay. So as we use this pronoun, क्योंकि हम इन pronouns को हम person की name की जगह पर use करते हैं, right? So for that reason they are called personal pronouns. इसीलिए उन्हें personal pronouns कहते हैं. See here we have one example. Like Rohan likes to play football. And here it is replaced as हम रोहन के बारे में ही बात कर रहे हैं. As Rohan is a boy, so in place of Rohan here it is he. He plays football every day. Okay, so he is the goalkeeper of the team. So in football we have a goalkeeper. जैसे फुटबॉल करते वक्त जो नेट के पास खड़ा रहता है, जो बॉल को गोल नहीं होने देगा, he is goalkeeper. Okay. So that is it. So the special name Rohan is replaced by the pronoun he. So pronouns that are used in place of the names of special people or things are called personal pronouns. I think I don't know if you remember or not, but जब मैंने आपको pronouns करवाए थे at that time I told you कि अगर कोई भी people के place की जगह पर, यानी कि जो he, she, it, he, she, you, we, they and I, they are. So we use these pronouns in place of names of people, and it we use for things and animals. So as they are used in place of them, so these pronouns are called personal pronouns. इसीलिए उन्हें personal pronouns कहते हैं. Okay everyone. Now see, so here we have a pronoun for one person or thing. So I, you can be used for more than one also. Okay बेटा, अगर मैं किसी एक से बात कर रही हूँ, if I am talking to Manashwi, so it will be you only. And अगर आप सबसे एक साथ बात कर रहे हैं, so it will be also you. So you can be used for both. See here it is there. यहाँ पर भी है you. So it can be used for one person also and for many people also. So I, you, he, she, it. So they are used for only one when they are in one number. And when more than one, so we use we, you and they. तो कहाँ यूज करते हैं that you know, क्योंकि हमारा प्रोनाउन का पूरा चैप्टर जो है in grammar we have completed this. Okay, now we have some more pronouns. So which are used to point things or people. अगर कोई भी people है, कोई भी thing है, we are pointing them. So beta please keep your mic off. So there we have, so there we use some more pronouns like these, that, these and those. So these we use these for the objects that are only one in number and which is near to me. For example, see this marker. Okay, so this is a marker. So ये marker मेरे near है and it is one in number. So I will use
these. Okay, so for that reason I have to use it. I have to use these. But जब यही मार्कर मुझसे far हो, when it is far and if it is in one in number, then I have to use that. So that is हम these and that far के लिए use करते हैं, but these so near के लिए these and for far we use that. In a similar way, when any object is near to me but they are more than one in number, like this, two markers I have, so they are more than one and near to me, so I will use these, These. These. Now see it, I am showing you one thing. See, class. Okay. So आपको ये सारी benches दिख रही है अभी? Can you see these benches, everyone? Desk. Yes, ma'am. Yes. So Yes. more than one. Full cup. Yes, ma'am. स्टार्ट हो जाए. ओके बेटा. सी, तो बहुत सारी डेस्क है यहाँ पर एंड दे आर मोर देन वन, बट वो बेटा वो अभी आपके लिए तो बेटा कुछ दिन के बाद शायद खुल जाएगी. So here we have more than one benches and वो मुझसे far है अभी. So for that I have to use those. Like those are benches. Benches. Yes, very good. Like those are benches. So in that way, yes, those are benches. So in that way we use this. That is these, that, these and those. So they are. So we use these pronouns to show something. Okay, everyone. So that is our language ladder. Now we will move to pre-reading of the chapter. Pre-reading. So here what we have is, share your favorite travel experience in class and you can talk about, so where did you go, what were the activities you did there, whom did you go with and what did you enjoy. So here we have, so आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है कि आप कहाँ गए थे, आपने वहाँ पे क्या किया. ओके, सो व्हाट वर द एक्टिविटीज यू डिड, आपने वहाँ पे क्या किया, जाकर किसके साथ गए थे, कैसे एंजॉय किया. So that is what you have to tell. Okay. So अगर आप कहीं पर गए हो और किसी के पास अगर रेडी है आंसर, then he or she can tell me. Yes, Dhruva, do you want to say something, beta? उसका वीडियो भेजना है, अभी ही बोलना है इसको. क्या अभी आप कुछ बच्चों का मैं अभी भी ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको वीडियोस पे कहती हूँ बनाने के लिए, बट कोई मुझे वीडियो सेंड नहीं करता. अभी भी मैंने कहा कि मुझे मनस्वी के अलावा फ्रेंडशिप का किसी का वीडियो नहीं आया है. ओके, तो वीडियो अगर बनाने के लिए कहूँगी, विल यू मेक अ वीडियो फॉर दिस शीट, क्योंकि मैंने आप लोगों को फ्रेंडशिप का वीडियो भी कहा था. किसने बनाया? नो वन शेयर्ड एनी वीडियो विथ मी. सिर्फ सेकेंड ए में से मुझे मनस्वी का वीडियो मिला है और किसी ने तो मुझे वीडियो शेयर ही नहीं किया है. मैम मैंने बनाई हूँ, आज भेज दूंगी. राइट. तो अगर मैं आपसे कहूँगी भी कि बेटा आप अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस एक वीडियो में बनाकर मुझे बताओ, तो विल यू डू दैट? आप करेंगे वो? तभी मैं दूँ आपको, अदरवाइज आई विल नॉट गिव दैट वर्क टू यू. भेजेंगे. Okay, if you will send that video, okay, so you can share a video with me. इसमें आपको ये कहना है कि where did you go, आप कहाँ गए थे, whom did you go with, किसके साथ गए थे, फिर what were the activities you did there. Okay, so क्या आपने और कौन सी activities वहाँ पर की and what did you enjoy.
enjoy the most, वहाँ पे सबसे ज्यादा आपको किस में मजा आया. Okay, now see kids, here we have read these words. So here we have some helping verbs and some doing words. कुछ doing words और verbs we have. तो ये मैंने आपको सिखाया है कि जब प्रेजेंट में होता है तो we use another form of doing words and when they are in past, तो या तो हम उन वर्ड्स में ed ऐड करते हैं या तो फिर हम उनकी स्पेलिंग चेंज करते हैं. So is, so in present we use is, but in past it is was. Okay. Then sit, in present it is sit, in past sat. Run, ran. Has, had. Take, took. So see kids, in this word, इतने वर्ड्स में क्या किया? We changed the spelling. Okay. Now see in this, that is love, loved, hire, hired, reach, reached, click, clicked, and shout, shouted. So here we have, so in this doing words, हमने क्या किया? उसमें ed ऐड किया है. We have added ed. So these are some doing words. So whatever video you meet, because बेटा आप पास्ट में गए थे वहाँ, right? आप प्रेजेंट में नहीं गए थे, आप ऑलरेडी वहाँ पर जा चुके हो. So that becomes your past. तो वो आपका पास्ट है. So when you say something, अगर आप अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करते हैं in the form of a video, then what you have to do is कि आप पास्ट फॉर्म के डूइंग वर्ड्स उसमें शेयर करेंगे. जैसे कि we hired a bus or we hired a car to travel in that city. So in that way, hired का मतलब होता है रेंट पे कुछ लेना. अगर आप कहीं पर जाते हो, ठीक है, at any other place for traveling, वहीं पे ट्रैवल करने के लिए अगर आप टैक्सी, जैसे अगर आप if you call a taxi, so that is you hired a taxi. Okay, that means कि आपने उस टैक्सी को हायर किया है. So that is, बेटा please keep your mic off. बेटा, okay. So you have to use this past form to share your travel experience. Okay, everyone. So that is it. So this is our pre-reading portion. Now everyone, please look at the next page. We will start reading of this chapter. Okay, so in the reading kit we have a story about children, that is a boy and a girl, Abha and Abhay. So Abha and Abhay, they went to Kerala for a trip. ट्रिप के लिए वो केरला में गए. So they are sharing their travel experience. वो अपना travel experience कि उन्हें traveling में उन्होंने क्या देखा, कैसे गए, उन्हें क्या अच्छा लगा. So they have shared their travel experience. So that is what we are going to see in this chapter. See here you can see that it is a beautiful, these are very beautiful pictures. So this is a picture of a houseboat. So they have even shared their pictures. उन्होंने अपने pictures भी हमारे साथ share किए हैं. So that कि अगर किसी ने केरला नहीं देखा है, so you can see this. So see, here we have a beautiful houseboat, so many coconut trees. Then see, here we have a man dressed up to perform कथकली. कथकली perform करने के लिए यहाँ पर ये देखो, ये man है, he is dressed up, right? Then here we have a boat जिसमें बहुत सारे अभी बैठे हैं. They are men and they are having a race. Do you know this? Do you know anything about this? आपको इसके बारे में कुछ पता है? जो केरला गए होंगे शायद उन्हें. Yes ma'am. Yes ma'am. I know you. Okay. I go. Please keep your mic off, बेटा. किसे पता है what is this? Write I in the chat box. Write I in the chat box. So you know what it is. Yes, please. Yes, please. Boat race, ma'am. That is a boat race. Very good. Because there they have a tradition. In a Kerala, they have a tradition कि जहाँ पर वो boat race करते हैं. Okay, so they perform a boat race
the people in Kerala perform boat race. So it is a picture of a boat race. Okay, very good, beta. Very good. Okay, kids. So now we will start reading of the chapter. Okay. So we will be starting reading. So beta, every time या तो फिर मैं फर्स्ट से स्टार्ट करती हूँ या तो लास्ट से स्टार्ट करती हूँ, तो बीच वाले बच्चों को चांस नहीं मिलता. So today I will start from middle. Okay, so you have to read. आपको रीड करना है and I will explain the chapter. So okay, so we will be starting from नव्या. बीच वाले बच्चों का चांस आ जाए. तो नव्या बेटा स्टार्ट रीडिंग. Abha and Abhay went on a trip to Kerala with their parents. They travelled by train. Kerala is in South India. Many tourists from all over the world came to see this beautiful place. Mummy, when will we reach? Asked Abhay. We will reach Kerala. Okay, Navya. Okay, very good. Yes. Thank you, ma'am. Welcome. So Abha and Abhay. So Abha, that is a girl, and Abhay, he is a boy. Okay, so went on a trip to Kerala. See, dear, please अच्छे से सुनना बेटा ये स्टोरी. ये पूरी उनकी पास्ट फॉर्म में है. This full story is in past form. अब तक आपको स्टोरीज या तो प्रेजेंट, मोस्टली सभी प्रेजेंट फॉर्म में ही आई है, इन प्रेजेंट टेंस ओनली, बट दिस इज इन पास्ट फॉर्म क्योंकि वो जाए मतलब वहां गए थे, so that becomes their past. Okay, so Abha and Abhay went on a trip to Kerala with their parents. Went मतलब कि that is go, it is past form of go. So Abha and Abhay Kerala जाते हैं, पे जाते हैं, that is to Kerala, and that is with their parents, अपने पेरेंट्स के साथ. They travelled by train. उन्होंने ट्रैवल किया. दिस इज अ डूइंग वर्ड इन पास्ट फॉर्म. वो ट्रेन से ट्रैवल किया. एवरीवन प्लीज अंडरलाइन अभय, केरला एंड ट्रैवल. अंडरलाइन अभय, केरला एंड ट्रैवल. Underline Kerala, Abhay and travel. Okay. Now, Kerala is in South India. South India, जैसे कि मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन के वक्त भी बताया था, that directions जो होती है, they help us to find a way. Okay. So they show us way. They show us way. So वो north, east, वेस्ट एंड साउथ, ऐसे 4 डायरेक्शंस होती है. तो अगर हम अपने इंडिया का पूरा मैप देखें तो केरला इज इन द साउथ, तो वो साउथ में है. तो दैट्स व्हाई केरला इज इन साउथ इंडिया. मैनी टूरिस्ट, प्लीज अंडरलाइन दिस वर्ड एवरीवन, टूरिस्ट. टूरिस्ट मीन्स दे आर द पीपल हु ट्रैवल. जो ट्रैवल करते हैं, जो घूमने जाते हैं, दे आर कॉल्ड टूरिस्ट. So many tourists from all over the world come to see this beautiful place. That is Kerala. Kerala is very beautiful place. So पूरे वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से people जो होते हैं, that is they are called tourists, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं. Okay, so tourists आते हैं इस ब्यूटीफुल प्लेस को देखने के लिए. Mommy, when will we reach? Ask Abhay. तो अभय ने पूछा उसकी मम्मी से, when will we reach? हम कब पहुंचेंगे? So they are on a train, and अभय ने अपनी मम्मा से पूछा कि हम कब पहुंचेंगे. Okay, so now after Navya, Priyansh. Yes, ma'am. Yes, beta, read. We will reach Kerala in 10 hours. Their mother replied, the railway
journey was fun. Next morning, they reached Alappuzha. Yes. Okay. Okay. Priyank. Ma'am. Beta. Welcome. So yes. So as Abhay asked his mother, their mother replied, "We will reach Kerala in 10 hours." 10 घंटे, 10 hours. तो उनकी मम्मी ने उसे रिप्लाई दिया कि हम केरला 10 hours में पहुंच जाएंगे. Okay. So their mother replied that is to give answer. Replied that is to give answer, and reply is a verb to be formed, but when we write it in a past form, that is replied. Okay. The railway journey was fun. Journey मतलब कि एक to go from one place to another place, that is a journey. तो जो उनकी रेलवे की जो जर्नी थी, जो रेलवे में बैठकर वो ट्रैवल कर रहे थे, उसमें उन्हें बहुत ही मजा आया. इट वॉज फन. प्लीज अंडरलाइन रिप्लाई एंड जर्नी. एवरीवन अंडरलाइन रिप्लाई एंड जर्नी. रिप्लाइड जर्नी. Next morning they reached Alappuzha. Okay, so next morning, after 10 hours, so it was next morning, दूसरे दिन सुबह वो आलापुजा पहुंच गए. Reach मतलब कि पहुंचना. Again, reach is a past form of doing word reach. So underline reach and Alappuzha. Alappuzha जो है, it is a name of a city in Kerala. Kerala का वो एक city है. That is Alappuzha. Okay, so Alappuzha is the name of a city. So underline reach and Alappuzha, everyone. Okay. मैम, ये नीचे वाले जो टूरिस्ट के सिवा थे ना, वो फिर से दिखाओ ना, क्योंकि मेरे रह गए. Replied, journey, reach, Alappuzha. Yes, sir. Okay, after Priyank, Nirmit. आई. Yes, Nirmit. बेटा मैं रोल नंबर वाइज कर रही हूँ. Okay, Nirmit is there. Yes, Nirmit. We are waiting, Nirmit. Okay, Devesh. Beta, are you not able to hear my voice, everyone? Are you able to hear my voice? मैम आपकी वॉइस. यस मैम, आपकी वॉइस आ रही है. यस मैम. ना ही निर्मत ने आंसर नहीं दिया, ना ही देवेश आंसर दे रहा है. तो आई थॉट कि मैं ऑडिबल नहीं हूँ और बहुत. ओके. Okay, Arav Patel. Now next is Arav Patel. यस मैम. Hmm. नेक्स्ट मॉर्निंग they reached मैम. reach के बाद क्या है? आपका ध्यान नहीं था, इसका मतलब ये है, ये लाइन हमने ऑलरेडी कर ली है. फिर भी मैंने सोचा कि लेट आलापुजा. बेटा इट इज आलापुजा. ओके मैम. आलापुजा they took a taxi to the hotel. Yes. Continue. And
double. V is the enjoy the view. That is view. view is View. the ala pa alapa alapa is Alappuzha beta, Alappuzha. is famous. Famous. That is famous. Famous. Is a beautiful. काटो बेटा इसे यहाँ से। सी इतना बी ए सिक्के क्या होता है? बेक। बी ए सिक्के इज बेक एंड क्या है? बेक वाटर बेटा, बी है वाटर्स भी है तो बैक वाटर। बड़े बड़े वर्ड, हाँ अगर बड़े वर्ड हो तो उसे बीच से काट देना है। यस, बैक वाटर And bridge. Beach and beach. Yes, okay. Very good, Arav. So they reached Alappuzha. Okay, वो Alappuzha पे पहुंच गए। They took a taxi to the hotel. अब वहाँ पे रेलवे, वो Alappuzha पूछे तो that is they are at the railway station. वहाँ के रेलवे स्टेशन पर है अभी वो, बट वहाँ से अब उन्हें होटल तो जाना पड़ेगा। तो ये took a taxi, वहाँ से उन्होंने टैक्सी ली। टैक्सी देखिए वो कार होती है, ओके, बट वी हैव टू पे देम रुपीज देकर फिर हम उसमें बैठ सकते हैं। लाइक ऑटो रिक्शा, लाइक वी हैव ऑटो रिक्शा, इन सिमिलर वे अगर कोई कार हो तो दैट इज कॉल्ड टैक्सी। So they took a taxi to the hotel. Here this took, it is the past form of take, T-A-K-E, take. अगर उसे हम past form में लिखें तो it will be took. So from the railway station, उन्होंने टैक्सी ली up to the hotel. Abha and Abhay sat near the windows to enjoy the view. Okay, to enjoy the view. So Abhay अब टैक्सी में, in the taxi, आभा एंड अभय वो दोनों विंडोज के पास बैठे। ओके, सेट दैट इज सिट ओनली, बट सिट यूज इन प्रेजेंट फॉर्म एंड सेट वी यूज इन पास्ट फॉर्म। तो वहां पर वो बैठे, दैट इज नियर द विंडो, विंडोज के पास इसीलिए बैठे ताकि वो व्यू, व्यू मतलब कि नजारा, पूरा आलापुजा कैसा दिखता है, उसका व्यू कैसा है, जो सो टू सी दैट द सेट नियर द विंडोज। Alappuzha is famous for its beautiful backwaters and beach. Alappuzha is famous. Famous का मतलब होता है मशहूर होना। Famous means कि जिसके बारे में सभी को पता हो। Like we know about cricketers because they are famous. हम टीवी एक्टर्स को पहचानते हैं, like film actors like अमिताभ बच्चन, okay, शाहरुख खान, सलमान खान, because they are famous. So जैसे वैसे लोग या तो कोई भी प्लेस, एनीथिंग जो सबको जिसके बारे में पता हो, दैट इज फेमस। सो आलापुजा इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल बैक वाटर्स। उसके जो बैक वाटर्स है दे आर वेरी ब्यूटीफुल। नाउ व्हाट आर बैक वाटर्स? सो हियर यू हैव सी पर्पल कलर की लाइन में दिया है, दैट इज पार्ट्स ऑफ रिवर्स। इट इज बैक वाटर्स यानी कि पार्ट्स ऑफ रिवर्स वेयर द वाटर मूव स्लोली। रिवर कुछ कुछ ऐसे पार्ट है कि जो स्लोली मूव होते हैं। ओके, सो दैट इज बैक वाटर्स। तो आलापुजा में बैक वाटर्स बहुत ही फेमस है, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, सो दे आर फेमस एंड ऑल्सो द बीच, वहाँ के बीच वो भी बहुत ही फेमस है। ओके, सो नाउ टाइम टू अंडरलाइन न्यू वर्ड किड्स। सो अंडरलाइन टैक्सी, सो दे टुक अ टैक्सी, सो देयर अंडरलाइन टैक्सी, देन व्यू, famous, backwater. Okay, these you know. So underline taxi, view, famous and backwater. Okay. We might Now underline done. okay. ओके बेटा,
Okay, kids. Now, okay. So it is 9:40 already. So now we will not continue. ठीक है, अब हम continue नहीं करेंगे. We will continue reading of the chapter in next class. Okay, everyone. So this is all about today's class. Today we did language ledger, pre-reading portion, and we started reading of the chapter that is Achit. Ma'am. Yes. आज का होमवर्क क्या है? बेटा वही बता रही हूँ. वेट फॉर सम टाइम. कभी भी ऐसा हुआ है जैसे मैंने आपको होमवर्क ना दिया हो या बताया ना हो? एवरी टाइम आई टेल. सो वेट फॉर सम टाइम. सो टुडेज होमवर्क इज अगेन कि जो भी न्यू वर्ड हमने अंडरलाइन किए हैं तो वो आप न्यू वर्ड अपनी 1A नोटबुक में लिखेंगे. तो योर होमवर्क इज टू राइट दिस न्यू वर्ड दैट इज द अंडरलाइंड वर्ड इन योर 1A notebook. Okay, everyone. So this is it. So we will continue reading in the next step in the next class. Okay. So this is all about today. Okay. Yes. So your attendance is remaining. Okay. So as I say your name, you have to say present. And present करने के बाद आप leave हो सकते हो. आप after saying present, leave. You can leave. Yes, Pulastya. Present, ma'am. Dharam. Present, ma'am. Ruhi. Present, ma'am. Daksh. Daksh Dekharia. Beta, don't write in the chat. Oh yes, beta, you can leave. जिसकी अटेंडेंस हो गई है आप लीव हो सकते हो. Yes, okay. Are you Present, ma'am. Madhav Paladia? Present, ma'am. Manasvi Jetloja? Present, ma'am. Breed? Present, ma'am. Navya? Present, ma'am. Priyan? When can I leave, ma'am? Yes, beta. Nirmit? Ma'am, Nirmit Mistry is present, ma'am. अभी अटेंडेंस दे रहे हो निर्मित? यस, यू कैन लीव बेटा. अभी अटेंडेंस दे रहे हो तो जब मैंने रीडिंग के लिए कहा था तब माइक क्यों ऑन नहीं किया? यस निर्मित. ओके. देवेश? त्रिशा? न? आरव? Present, ma'am. I can leave. यस यू कैन. दुर्वा पटेल? Present, ma'am. बाय. ओके. हस्ती पटेल? नित्या राज? Bye, ma'am. हाँ बेटा बाय. श्लोक सांझा? Lokshandra is present, ma'am. Bye, ma'am. बाय. केविन सावरिया? Present, ma'am. Nirmit Mistry is present, ma'am. यस निर्मित. जिज्ञासा सेनापति? Ignatia Senapati is present, ma'am. Bye, ma'am. बाय. श्रद्धा मुदलिया? Present, ma'am. एंड ध्रुवा वामजा? Hasti Patel is present, ma'am. ओके हस्ती. बाय. ओके एवरीवन. बाय बाय. यस यू कैन लीव बेटा.